Hello students, hello parents, hello teacher. I am Viraj Upadhyay. I have been teaching maths since last 6 years and I am going to share few tips with which you can improve your maths. Right? अगर आप स्टूडेंट की तरह देख रहे हो, you can directly implement the tips and earn the benefit. अगर आप टीचर या पेरेंट हो तो you can make your child implement the tip and earn the benefit. So 5 quick tips to improve your maths during this extra time you have in this quarantine. Let's get on with the first tip. But before that, क्या आपने कभी सोचा है हम मैथ्स क्यों पढ़ते हैं? Why do we learn maths? Right? कभी कोई नहीं सोचता. Let me tell you, हम मैथ्स इसलिए पढ़ते हैं because it teaches us several set of life skills which will make your future brighter and better. जैसे it teaches us how to take correct decisions, it teaches us logical analysis, it also teaches us data handling, and through the analysis you can get better decision making, right? And also you can always take calculative risk. So this is why we learn maths. So चलो जल्दी से शुरू करते हैं. Tip number 1. Tip number 1, love the subject. See, until you love the subject, subject will not love you back. अब आप बोलोगे, how to love the subject, right? I will tell you 3 things. First of all, remove the fear. As Madame Curie says, everything in life is to be understood and not to be feared, right? Remove the fear. ये subject है. This is made by humans. Humans have made it, so you can always crack it, right? So lose the fear. Secondly, what you can do? You can make creative flashcard. I will share you. See, this way you can make creative, colorful flashcards. Write your formulas. Use your favorite colors so that favorite color will held on to your memory for longer period of time. ऐसे आप beautiful cards बना सकते हो. So this is one way to get. You can also create charts, right? Formula charts. आप फॉर्मूला के चार्ट्स बनाओ जहां आपकी रेगुलर विजिटिंग प्लेसेस है वहां आप चिपका के रखो. जैसे इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल, अबव योर मे बी योर स्लीपिंग पोजिशन, इवन इन योर वॉशरूम यू कैन स्टिक सेवरल फॉर्मूलाज. दिस विल मेक यू लव द सब्जेक्ट, राइट? बिलीव मैथ्स इज इजी. याद कीजिए, आपके बचपन में अच्छे मार्क्स आते थे मैथ्स में, राइट? पर कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट से आप लोगों ने सीखना छोड़ दिया, इसलिए मार्क्स कम होने लगे. फिर से वहीं से आप पिकअप करो, सीखना शुरू करो, मार्क्स फिर से बढ़ने लगेंगे. सो लेट्स गेट टू द सेकेंड टिप. टिप नंबर 2. Tip number 2, 2020 challenge. Guys, come out of TikTok challenges and take this 2020 challenge. What is this 2020 challenge? Very simple. 20 sums for next 20 days continuously, right? Vigorously. Give it a shot and try it. You will see that it will give you ample of practice, enough practice, and you will see your marks improving, right? So take 2020 challenge. 2020 मतलब 20 days for 20 sums for continuously 20 days. Okay, and you can keep a track, right? I have designed this. You can also make such tracker, maths tracker, जहाँ पे आप डेट लिख सकते हो और टिक मार्क कर सकते हो. This will make it a very formidable habit for you and you will love to do it. So this is how you can track it. Take 2020 challenge, guys. Now tip number 3. Tip number 3, कैसे करोगे 2020 challenge? Selection of material. Guys, it's very simple. Textbook. Go for the textbook first. After clearing the textbook, you can go for practice books and other materials. You have enough material available online. I have also shared some links here from where you can get math sums as for practice. So enough material is available. Use it. But go for the textbook first. Now let's go to the tip number 4. Very important, 4th tip, which is doubt clearing. Do not hesitate. Do not feel ashamed of solving doubts, right? Because everybody needs to learn it from somebody, right? So do not feel ashamed. Remember, after 5 years, only your knowledge will matter and not your impression. Live to express, not to impress. Doubt solving is equally and very important if you want to improve in maths. Doubt solving, very important. So doubt solving में आप hesitate मत करो, पूछो, ask it out, right? Don't feel ashamed, do not hesitate. Like I said, everybody needs to learn it from somebody, and please make sure you make a separate notebook for doubt solving. उसकी एक सेपरेट बुक रखो ताकि आपको जब अपने डिफिकल्ट सम्स देखने आप उसमें आपका वक्त कम बिगड़ेगा. यू विल सेव योर टाइम
and you will be able to revise your doubts again and again. So make it very simple and separate doubt solving. And final tip for the day, last tip, very important, fifth tip of the day, it is a STAR tip. As you can read here, STAR. What is a STAR tip? STAR stands for skill, test, analyze, reflect. STAR, remember this. स्किल पहले प्रैक्टिस करो, 2020 चैलेंज लो, 20 दिन में 400 सम सॉल्व करो एंड बिल्ड योर स्किल. देन टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल है आपके पास, स्कूल लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, काफी सारे ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है. टेक टेस्ट एंड देन इंपॉर्टेंट एनालाइज. इस पार्ट पे मैं फोकस करना चाहूंगा. डू यू नो गाइज, सचिन तेंदुलकर इज द ओनली बैट्समैन हु गोज इनटू द नेट प्रैक्टिस इवन आफ्टर द मैच. व्हाई? सो दैट ही कैन लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक. कौन से बॉल पे मैं आउट हुआ, एंड देन यू कैन नॉट गेट हिम आउट ऑन द सेम बॉल, राइट. तो आप भी अपने टेस्ट पे एनालिसिस कीजिए, कौन से सम्स है जो आपको डिफिकल्ट है, एंड गेट इनटू द माइक्रो एनालिसिस. विच चैप्टर? नॉट इनफ, गेट इनटू इट. विच एक्सरसाइज? स्टिल नॉट इनफ, गेट इनटू द माइक्रो एनालिसिस. विच टॉपिक? एंड अल्टीमेटली विच बेसिक ऑफ मैथ इज हर्टिंग यू, राइट. कैच द नर्व विच पेन्स द मोस्ट. और वहां पे आप रिफ्लेक्ट कीजिए. आर, लास्ट आर, रिफ्लेक्ट मतलब उसी पॉइंट को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उस 2020 चैलेंज में इंक्लूड कीजिए, एंड देन यू विल सी, यू विल अर्न लॉट ऑफ मार्क्स इन द मैथ्स. आपके मार्क्स अच्छे से इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे, पर इंप्रूवमेंट नीड्स पेशेंस, राइट. प्रैक्टिस, एंड आई होप you will all do really well in maths. So this is it from my side. Thank you very much.